everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants and the topic Pollination. In today's session, we are going to solve a short answer type question of 3 marks. This question was asked in 2 ways. First, differentiate between wind-pollinated and insect-pollinated flowers, and second, write the differences between wind-pollinated and insect-pollinated flowers, give an example of each type. तो इस क्वेश्चन में हमें विंड पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. Wind pollinated flowers and insect pollinated flowers. The pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents. Wind pollinated flowers के pollen grains जो होते हैं बेटा वो light और non-sticky होते हैं ताकि वो wind में easily travel कर सकें. Now insect pollinated, the pollen grains are generally sticky in animal pollinated flowers so that the body of the animal gets a coating of them to carry to the stigma. जबकि जो insect pollinated flowers के anthers होते हैं वो sticky होते हैं ताकि वो animal body पे stick कर सके transport के लिए. Clear? Then they often possesses well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into wind currents. जो wind pollinated flowers होते हैं उनके जो stamen होते हैं वो atmosphere में air में well exposed होते हैं ताकि हवा की मदद से वो easily transport हो सके, dispersed हो सके. Clear? But in insect pollinated flowers there is no need to disperse pollen grains into the wind क्योंकि उन्हें insect लेके जाते हैं. Then in wind pollinated flowers, large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. जो wind pollinated flowers होते हैं बेटा उनके जो stigma होते हैं वो large होते हैं और feathery होते हैं ताकि वो easily airborne pollen grains को trap कर सकें. जबकि जो insect pollinated flowers होते हैं उनके stigma are usually sticky in nature. Then wind pollinated flowers. Majority of wind pollinated flowers are small and devoid of bright colors and nectar. जो wind pollinated flowers होते हैं इनके जो flowers होते हैं वो small होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा bright colors नहीं होते और ना ही nectar produce होता है. But in insect pollinated flowers, majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. इनके जो फ्लावर्स होते हैं लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है इनके पास और नेक्टर हाई अमाउंट में होता है. ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. जो wind pollinated flowers होते हैं उनके पास single ovule होता है हर एक ओवरी में और इनके पास बहुत सारे flowers एक inflorescence में packed रहते हैं. When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. जबकि जो insect pollinated flowers होते हैं जब वो छोटे होते हैं तब वो cluster inflorescence में arranged रहते हैं. Clear? Then in wind pollinated flowers are odorless, but in insect pollinated flower, the flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract these animals. Wind pollinated वाले flowers में कोई odor नहीं होता, insect वाले में जब वो flies और beetle से pollinate होते हैं तो foul odor produce करते हैं ताकि ये insect उनकी तरफ attract हो सके. Then in wind pollinated flowers, there is no need to provide rewards, but in insect pollinated flowers, to sustain animal visits, the flowers have to provide rewards to the animals. Nectar and pollen grains are the usual floral rewards. Wind pollinated flowers में rewards की ज़रूरत नहीं होती, floral rewards की ज़रूरत नहीं होती, पर insect pollinated flowers में ज़रूरत होती है. Finally, the examples. Wind pollinated flowers के example है maize, grasses और insect pollinated के है Rafflesia, mimosa. So I hope this question is clear to you. Thank you.